Good morning, students. Hope you all will find at your home. Welcome again in your English class. Students, today we will read our chapter number 2, Wonders in the Water. Students, you know that many animals live in the water. Today we will know about some animals that live in the water. Look, this is a starfish. A starfish is a sea animal that has 5 arms. It has hundreds of small feet under these arms. A starfish looks like a star and can be of any size or color. Now we will know about a jellyfish. Look, students, this is a jellyfish. It has a body that looks like a bell. It has many long and thin arms around it. There are many kinds of jellyfish. A jellyfish has no eyes, no bones, no heart, no blood and no brain. Its body is full of water. Now we will know about a seahorse. Look, student, this is a seahorse. A seahorse is a small bony fish. Its head looks like that of a horse. A seahorse swims with its body standing straight. It can also change color. Now we will look an octopus. This is an octopus and it is a sea animal. It has 8 arms and 2 eyes. It has a mouth in the middle of all its arms. It has no bones. When an octopus feels afraid or is in danger, it sprays black ink at its enemy. Now, students, we will revise the question answer of chapter 2. So, be ready with your pencil and notebook and start writing with me. First of all, write down chapter 2, revision. And what is the name of chapter 2? Wonders in water. Now write down question number 1. How many arms and feet does a starfish have? स्टारफिश की कितनी भुजाएं और पैर होते हैं? Now you know na how many arms and feet does a starfish have? Yes, a starfish has 5 arms and hundreds of small feet under these arms. So start writing answer. A starfish has 5 arms. यानी स्टारफिश की 5 भुजाएं होती हैं and hundreds
of small feet under these arms. और ये जो 5 आर्म्स होती हैं इन भुजाओं के नीचे hundreds of यानी सौयों स्मॉल छोटे छोटे फीट यानी पैर होते हैं. यानी कि स्टारफिश की 5 भुजाएं होती हैं और इन भुजाओं के नीचे इनकी सौयों छोटे छोटे पैर होते हैं. Now leave one line and start writing question number 2. Which sea creature has no eyes, heart, blood और ब्रेन. समुद्र का ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके ना तो आईज होती हैं, ना दिल होता है, ना खून होता है और ना ही दिमाग होता है. डू यू नो हु इज? हु हैज नॉट आईज, हार्ट, ब्लड और ब्रेन? यस, you just read in this chapter about this creature that has no eyes, heart, no blood or no brain, and this is a jellyfish. So start writing answer. A jellyfish has no eyes, bones, sorry I forget here, HBONES, bones, heart, blood और ब्रेन. यानी जेलीफिश के ना आंखें होती हैं, ना बोन्स यानी हड्डियां होती हैं, ना ही हार्ट यानी दिल होता है, ना ही ब्लड ना ही खून होता है और ना ही ब्रेन यानी दिमाग होता है. यानी ये सब चीजें उसमें नहीं होती हैं. तो क्या होता है? इट्स बॉडी हैज ओनली वाटर, क्योंकि ये केवल पानी से बनी हुई होती है. नाउ वी लीव वन लाइन एंड स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 3. When does an octopus throw out black ink? क्वेश्चन. एक ऑक्टोपस व्हेन यानी कब, थ्रो आउट यानी फेंकता है, ब्लैक इंक यानी काली स्याही. यानी एक ऑक्टोपस काली स्याही कब फेंकता है? डू यू नो व्हेन इट थ्रोज ब्लैक इंक? यस, व्हेन द ऑक्टोपस फील्स अफ्रेड from any other animals or anything, it sprays black ink on its enemy. So start writing with me. An octopus throws out black ink
when it feels afraid or is in danger. फुल स्टॉप. यानी जब ये खतरा महसूस करता है, जब वो डर महसूस करता है या फिर खतरा महसूस करता है, तभी एक ऑक्टोपस ब्लैक इंक थ्रोज करता है यानी फेंकता है. So students, these are 3 question answers we have done today. Tomorrow we will do remain explanation of this chapter and revision of question answers. Till then, goodbye everyone and take care.